top of this hour, ladies and gentlemen, the stunning story that is still unfolding across the border in Pakistan. A train traveling from Quetta to Peshawar has been hijacked by a rebel group that calls itself the Baloch Liberation Army. The train in question is the Jaffar Express, which has over 450 passengers on board. It was first fired upon, then the railway track was blown, and the train was forced to halt near a tunnel. The Baloch Liberation Army, which has claimed responsibility, has warned the Pakistani government of eliminating all hostages if a counter-operation is launched against them. A statement reportedly by the BLA claims that they have taken 182 passengers hostage and have already killed 20 Pakistani military personnel. Now, despite facing a warning of mass execution, the Pakistani army has launched an operation to rescue hostages, and a gunfight is reportedly underway. The Interior Minister, Mohsin Naqvi, has condemned the attack by the BLA and has warned the rebel group of strong retaliation with no scope of negotiation. So the situation on the ground in Balochistan is still ongoing. Ladies and gentlemen, may I just add that the details are sketchy at this point of time. It's very difficult to verify who's telling the truth. And I say this because the area where this hijacking has happened, an entire train being hijacked, something you don't hear about very often, well, this area has no internet to speak about. In fact, we believe that it has been difficult, given the terrain of this area, given that this is a rocky terrain, it's become very difficult for the reinforcements that the Pakistan government has sent in terms of troops even to reach this area. So details are sketchy. There are claims and then there are counter claims. This is, as they say, a fog of war. A clear picture yet to emerge, but the story, as I tell, still developing in the rest of Baloch area. Bilal Baloch is a journalist, also an activist, joining us on the broadcast. Maruf Raza is a strategic affairs expert. He's joining us on the broadcast as well. Bilal Baloch, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहती हूँ. मुझे पता है कि डिटेल्स बहुत नहीं हैं इस समय. अगर पाकिस्तानी मीडिया में देखें तो बहुत डिटेल्स नहीं है. कुछ जो डिटेल्स आ रही है हमारे पास वो रॉयटर्स के थ्रू आ रही हैं, जितनी डिटेल्स हमने अपने व्यूअर्स को दी हैं. आप कुछ सुन रहे हैं वहां से कि इस समय हालात क्या हैं वहां पर? कुछ आप बता सकते हैं हमको? मैडम देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा है कि देखो, पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है. पाकिस्तान में 1971 में भी इसी तरह आपने लोगों से झूठ बोला कि पाकिस्तानी जवान आगे बढ़ रहे हैं और फिर इनके 93,000 जो पतलून हैं वो बांग्लादेश में गिर गई. यही हाल बलूचिस्तान में भी है. ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ. इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि आप पीटीवी को छोड़ें, जो पाकिस्तान का जो प्राइवेट जो बहुत बड़ा इदारा है, मैं उसका नाम लेता हूँ, जियो, उसने अपने चैनल में, उसको ये अलाउ नहीं है कि वो, उसने भी ये लिखा है कि वहां पे फायरिंग हुई है, ड्राइवर जख्मी है, दैट्स इट. किसी को ये मजाल ही नहीं है पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी फौज के बयानी के खिलाफ कुछ कहें. ये जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, बातें हमारे सामने आ रही है, बीएलए का जो सोशल मीडिया ग्रुप है वो बहुत एक्टिव है. वो पल पल की रिपोर्ट दे रहा है, और ये रिपोर्ट जो हमने सुनी वो भी बीएलए की तरफ से आया है. और जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, हम उसी को देख रहे हैं. पाकिस्तानी पे ना कोई भरोसा करता है, ना किसी ने किया है. 1971 में जब उन लोगों ने किया था, 1965 में जब उन लोगों ने किया था, आग उसका आपने भी देखा है, दुनिया ने भी देखा है. तो अभी की जो ताजा जो एक सिनेरियो है, हम बीएलए को हम वो करते हैं कि बीएलए ने क्लेम किया है कि उसने जाफर एक्सप्रेस जो है, जो वहां से आती है बलूचिस्तान में, उस पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है. उन 182 जो यरगमाली है वो उनके कब्जे में. और बीबीसी को मैं कोट करता हूं, वहां का जो रेलवे जो वो काम है, उसने ये बात तस्दीक की है कि उसमें ज्यादातर गवर्नमेंट मुलाजिम है. तो इससे ये जाहिर होता है कि उनके पास इंटेल था. जिन्होंने भी हमला किया है, जिन्होंने भी अटैक किया है, बीएलए के कर्मचारियों ने या फ्रीडम फाइटर ने या मिलिटेंट ने, उनके पास ये इंटेल था. और ये पहली दफा नहीं है, वो हर जगह पर जाते हैं, पहले उनके पास इंटेल होता है और इसी इंटेल को लेके वो हमला करते हैं. और ये आप देख रहे हैं कि अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है. मासवाए वक्फन बीएलए ये क्लेम कर रहा है. और मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, बीएलए ने जब भी क्लेम किया, जब उसके लोगों को शहीद हुए हैं या कुछ डैमेज हुआ है, जब भी हुआ, उसकी रिपोर्ट में ऑथेंटिसिटी है. जबकि पाकिस्तान, आपके मिसाल 1971, 1965, और अभी भी आप देख रहे हैं कि कैसे कह रहे हैं कि मुल्क सस्ता चल रहा है, मुल्क पता नहीं क्या चल रहा है. वो दुनिया आपके सामने की दुनिया में भीख मांग रहे हैं. ओवर टू यू. Okay, do stay with us, Bilaza, because, this is a train after all. All right, it may be carrying some
Pakistani military personnel, but it's also carrying civilians. To hijack an entire train. No, no, my point is to hijack an entire train and to hold people hostages. How wise is that is not something I'm clear about. But Maroof Raza, Bilal Saab here is saying that we need to go by what the Baloch Liberation Army is telling us, because obviously the Pakistani army or the Pakistani government is not telling us anything at this point of time. What should we believe? Who should we believe? I ask you this question because before coming to the show, I was trying to see who's reporting what. And apart from Reuters doing some bit of reporting and BBC speaking to some officials on the ground, there seems to be almost nothing about the incident on Pakistani media. So I was suspecting, I was saying, is this the Indian media jumping the gun and declaring that this is a big hostage situation, the biggest possibly that Pakistan has seen, simply based on what the BLA is saying on its social media handle? See, there has been a long-standing debate within Pakistan about the credibility of the Baloch cause. And the Balochis have been given a really raw deal by the Pakistani military, paramilitary, and the establishment. They are very resource-rich as a province, but the resources never get to them. And also the fact that the Balochis are filled with frustration and anger in the way their state has been exploited. Is the largest block of land, as you've seen in the map that you just shown. And that block of land is something that Pakistani establishment, the military in particular, fleeces for resources. And whether it's gas, whether it's mines, whether it's human resources. And after that, they give them a bashing to death. And in fact, Musharraf's time was particularly horrific when Balochi rebels were thrown out of helicopters while on flight. So there has been a great deal of frustration in Pakistan's Balochistan on what to do. How did Balochistan become the point of conflict? Balochistan is a major province of Pakistan. Earlier, it was a province of Oman and came into Pakistan due to a certain degree of mischief by people who orchestrated the Baloch joining the Pakistani Union. But that is questionable whether they actually joined or not. This was in 1948. And thereafter, the Balochis have always stood up for their land resources within the state. The Gwadar port, which is in news from time to time, is something which is under Pakistani military's gameplay. And they give it to the Chinese, they give it to elsewhere. But the reality is that the Balochis have had enough. And if it's handled badly, this problem is going to go on for quite some time. And if that happens, there will be a lot of losses of life. As it is, you can see from the pictures. And are we looking at a Are we looking at a loss of life here? Because the Baloch Liberation Army, Bilal Baloch, is at least claiming that 20 Pakistani military personnel have been executed. There are 182 who have been held hostage. And if there is a counter-offensive, all of them will be executed. Now, for any nation, this is an act of terror. I want to understand from you why the Balochis feel that there will be no retaliation from the Pakistani army. Look, I'm not sure whether they can execute any airstrikes, given the fact that, I saw some Indian news channels report that airstrikes have been launched. If they launch airstrikes, please remember that innocent people in this train will get killed as well, not just the Baloch activists / insurgents. But I want to ask you whether, give me a minute, I just want to get Bilal Baloch here. Bilal Baloch, are you hearing anything about any retaliatory strikes by Pakistan? नहीं, बिलाल, ये सवाल आपके लिए है। Of course, उन्होंने अपने फौजी दस्ते भेजे हैं, हमने वहां पे वीडियोस देखे हैं, वो इंजनों में सवार होके उन्होंने भेजे हैं, मगर ये आपको मैं बताता चलूं, this is not the first time they are doing there.
This operation is keep continuing on the mountain of the Balochistan from decade. 10 सालों से वो जाके शेलिंग करते हैं, लोगों को मारते हैं. और रही बात बलोचों की, मैं आपको आज एक बात बताता हूं. Whenever they attack Pakistan army, within even के they entered in the Pakistani camp, उन्होंने बच्चों और बूढ़ों और औरतों को छोड़ा है. ये बलोचों की एक हमारी एक कल्चर में है, हमारी ट्रेडिशन में है. हम जंग में भी जो उसूल है उनको रखते हैं. और यही वजह है कि बीएलए के जितने भी अटैक हुए हैं, आप देखें पंजगुर में गए, वो मशके में गए, उन्होंने कैंप में जाके उनको बच्चों को, बूढ़ों को और औरतों को अलग किया. चाहे वो रोडों पे जाके उनको रोकते हैं, बसों को रोकते हैं, बसों से उतारते हैं, वो बच्चों, औरतों और बूढ़ों को अलग करते हैं और आम लोगों को भी अलग नहीं छोड़ते. मतलब वो छोड़ देते हैं. वो उनको लेते हैं जिनके की जेब से अगर कोई आईडी कार्ड नजर आए जिसमें फौजी लिखा हो या एफसी लिखा हो या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा हो, फिर उसको जाके उनको बाकायदा अदालत में पेश करते हैं. उनकी अदालत लगती है, उस हिसाब से करते हैं. ये नहीं है. मतलब मैं एक दफा फिर आपको बोलता हूं कि बलोच अपने मादर वतन के लिए लड़ रहा है, वो कोई पैसों के लिए नहीं लड़ रहा. और पाकिस्तान का फौजी रंगरूट जो पंजाब में जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती, उनको रंगरूट भर्ती किया जाता है, वो पैसे के लिए लड़ता है. और यही डिफरेंसेस है कि आप देखें कि इतनी बड़ी फौज होके इतना बड़ा आपके पास एक, मतलब आपने दुनिया में अव्वा से एक फाशिज्म मचाया हुआ है, आपने एट्रोसिटीज की मिसालें कायम की, ह्यूमन राइट वायलेशन की मिसालें कायम की, मगर आप इन खुद कहते हैं आपके ये बहुत कम है, मगर इनको आप रोक नहीं रहे. दिस इज द पॉइंट दैट द बलोच स्ट्रगलिंग फॉर देयर मदरलैंड एंड द अदर साइड पाकिस्तानी आर्मी फाइटिंग फॉर द मनी एंड द, यू कैन से, वेजेस एंड समथिंग लाइक दैट. और दूसरी बात ये भी कहना कि आज रिटेलिएशन हो रहा नहीं, किसी के लिए फ्रीडम फाइटर, किसी के लिए फ्रीडम फाइटर है तो किसी के लिए टेररिस्ट है. नहीं मैडम, मैं आपको किसी के लिए फ्रीडम फाइटर तो किसी के लिए टेररिस्ट. दिस इज, लेट मी टेल यू वन थिंग. नहीं बिलाल साहब, मैंने आपकी बात सुन ली है. नहीं, मुझे I understand the cause of the Baloch people. You and Maruf Raza have put it well. I am just waiting to see how Pakistan retaliates. But even before they retaliate, they have to at least tell us what is happening in the rest of Baloch region, because all the information that we are getting is from the Baloch Liberation Army that seems to have held this entire train hostage and killed 20 army personnel. Beyond that, we have no information. We'll wait and see what the Pakistani government says officially, or whether there's a counter offensive that is launched at all. Bilal Baloch, thank you very much for joining us. Madam, thank you very much for joining us. It's a story we continue to track right here. Let me clear one thing. The freedom fighter exists. Freedom fighter word exists in the charter of the United Nations. I'm quoting the charter of the United Nations कि जब कोई आपके ऊपर आके दावा बोले और आपको मतलब यरगमाल बनाए, तो उसके लिए फ्रीडम फाइटर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है. और रही बात फ्रीडम फाइटर की, तो एक हिस्ट्री है फ्रीडम फाइटर की जिसमें चीफ गवेरा है और दूसरे भी हैं. तो आपको पता है पाकिस्तानी फौज, समझ गई मैं नहीं कहता, ये दुनिया कहती है कि कितनी फासिस्ट है और कितनी अनसिविलाइज्ड है और कितने वैशी हैं वो लोग. दैट इज द पॉइंट. नहीं, वो तो हम सबको पता है. नहीं, वो तो हम सबको इंडिया में पता है. लेकिन अब retaliation, I'm just sticking to the story today, not taking an ideological stand on this. I'm just waiting to see whether there is a retaliation or a statement from Pakistan. We'll wait for both. Thank you very much, both of you, for joining us on the show. Thank you. Thank you.